हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आर्ट सप्लाइज़ के बारे में। ऑल द बिगिनर आर्ट सप्लाइज यू विल एवर नीड, ऑल द डायरेक्ट लिंक्स यू कैन जस्ट check the description box and you will get all the links for all the supplies. If you are planning to buy from EBS, then must apply my code Priyanka EBS for 10% discount. Okay, so let's start with this watercolor set. So for watercolors you will need to have a cake set. अगर आप केक सेट खरीदना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट वन. इट कम्स विथ वेरी अफोर्डेबल प्राइस एंड वाटर कलर्स केक्स बहुत हैंडी होते हैं, ईजी टू यूज़ होते हैं एंड ईजी टू कैरी होते हैं. सो दे आर अ गुड स्टार्टिंग लाइक वाटर कलर्स. एंड देन वी हैव लाइक देन आई जस्ट करंटली परचेज दिस वाटर कलर ट्यूब्स. सो अगर आप थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप वाटर कलर ट्यूब्स के लिए जा सकते हैं. वाटर कलर ट्यूब्स में आपको क्वालिटी थोड़ी बेटर मिलती है एंड आई थिंक दे आर बेटर देन केक्स, क्योंकि एक तो आपको क्वालिटी बेटर मिलेगी प्लस इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है. येस, बिकॉज अगर आप कंपेयर करेंगे केक्स के साथ तो ये इससे आप काफ़ी केक्स लाइक फिल कर सकते हैं, हाफ पेंस. सो क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, तो आई थिंक ट्यूब्स आर बेटर ऑप्शन. बट इन केस यू आर जस्ट स्टार्टेड आउट एंड जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप केक्स के साथ जा सकते हैं. देन आई हैव दी sketchbook. This one is 160 GSM sketchbook and I would suggest कि ये sketchbook आप sketching के लिए and पेन के लिए यूज़ करो, बिकॉज वाटर कलर्स के लिए ये उतना अच्छा नहीं है. आई हैव यूज दीज फॉर वाटर कलर्स बट मुझे उतना ज़्यादा बेटर नहीं लगा बिकॉज इट्स जस्ट 160 GSM. ओके, एंड ऑब्वियसली वाटर कलर्स के लिए आई ऑलवेज प्रेफर कि 200 GSM से ज़्यादा का ही पेज आप प्रेफर करें एंड यूज़ करें, सो दैट जो रिज़ल्ट होता है दैट यू कैन सी द डिफरेंस एंड इन द रिजल्ट. बट इस पर उतना अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा वाटर कलर्स. दे विल लुक लाइक पैची एंड पैचीनेस काफ़ी ज़्यादा आएगा, लाइक यू कैन सी हियर. आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ 300 GSM papers and 200 GSM papers or 250 360 GSM papers from different brands. I have these artworks in 300 GSM papers and you can see the professionalism and the cleanliness. This is the textured paper, you can see, and जैसे जैसे ज़्यादा GSM होता जाता है यू कैन सी द टेक्सचर वेरी क्लियरली. एंड जो स्प्रेडनेस होता है 300 GSM में विच इज़ वेरी वेरी गुड. जो आपको 200 GSM में भी मे बी उतना अच्छे से नहीं दिखेगा, जो स्प्रेड होगा कलर वो इतने अच्छे से नहीं होगा, बट जितना ज़्यादा GSM पेपर होगा वो उतना अच्छे से वाटर कलर स्प्रेड होते हैं. सो यू कैन सी you can give the foggy look and spread like blending बहुत अच्छे से कर सकते हैं. एंड फ्लोरल्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है 300 GSM पेपर. so for water colors 300 GSM paper is most preferred paper, and for all those papers all the sketchbooks papers and all the stuff I have already a link in my description. You can just check and whatever suits you in terms of budget आप उसको check कर सकते हैं, then you can buy those. This paper is Brustro 300 GSM A3 paper, but you can also buy A4 papers. वो काफ़ी handy रहेंगे if you are beginning, क्योंकि A3 साइज़ का पेपर आपको कट करना पड़ेगा, but these I have cut and then I use. तो ये आपको कट करने पड़ सकते हैं, बट अगर आप A4 या A3 ही जो आते हैं वो ख़रीदेंगे तो इट विल बी मोर हैंडी एंड यूज़ करने में दे विल बी मोर ईजी. दीज आर द मोस्ट यूज्ड ब्रशेस फॉर मी एंड दे केम विद दिस सेट. लाइक दिस हैज़ 5 brushes in one set and they are really very very affordable.
एंड काफ़ी चीप भी होते हैं ये वाले ब्रशेस, बट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है फॉर मी, जहाँ तक मैंने यूज़ किए हैं। These brushes are from Brustro. These are mop brushes. These are natural hairs, so they are called mop brushes, क्योंकि इसमें जो bristles हैं उनमें बहुत thickness रहता है and they can hold lots of water, so that's why they are called mop brushes. And this brush is basically a 8 size brush, and very important to have if you are using large washes and large scale works. And these brushes, they come with like 5 set and one brush, like this is 12 size. I have one, this set has one more which is 10 size, but that's a 10 size brush I am giving away in my giveaway, so ये अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है because I have already packed it. So this brush is like flat brush and you can use for washes and like large scale washes, and this is angular brush, like it has an angle of almost 45 degrees, so you can use this brush for dry strokes and like wet on dry technique. So this works so well, and जब आप इसे wet करते हैं तो it will give you thin strokes. This is a fan brush, you can see, and these brushes are mostly used for acrylics, but मैंने ज़्यादातर water colors के लिए use करती हूँ, and mostly I use these two brushes and this 0 size brush, because this brush is very good for florals, and I can also have some thin strokes with this brush. When it is wet, let me show you how it works. Like it is now wet. Let me have a cloth with me. If you are starting out, just remember you should have some tissue papers or cloth with you, so because you need to soak up the brushes bar, so you have to do this. So that's how it will look when it is wet. It is so pointy, so I mostly use this brush. And ये वाला भी काफ़ी pointy है, but इसके bristles काफ़ी long है, so I use it rarely, but I use this one as well. This is size 12, size 10 का थोड़ा सा छोटा होता है, and ये वाले brushes आपको Amazon पे बहुत easily available हो जाते हैं, and they are very cheap and affordable. And ये वाले brushes भी Amazon पे available है, link is in my description box. And otherwise these brushes are available on many other sites if you want to buy. Amazon पे काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं. Now if you are a beginner and you want to start with detailing brushes, this set is very good set for beginners, and it has some like 4 brushes for detailing, and I have already reviewed them in my previous video when I received this from EBS as my in my brand ambassador kit. So these brushes I use for detailing a lot like these days, and with acrylics or with watercolors both. And this is very affordable set, like ₹100. Okay, so this set, these brushes you can use if you're just beginning your art journey, and they are very affordable and good quality brushes. I have these acrylics for now. This is Fabicryl acrylic colors which I bought from local stationery shop, and it has 10 colors. Like this is just for 200 rupees. This is very affordable, and you can simply purchase it from any local stationery shop. They are very easily available set for acrylics. Okay, each bottle contains 15 ml, and each bottle has a price which is 20 rupees. So the whole box is for 200 rupees only. And then I have these 2 acrylic set for from Camel, and they are 40 ml each, and one tube is ₹100. So if you are using white a lot, I use white a lot because I want pastel shades in my light shades in my work.
So I use mostly these like white acrylics in all of these colors. So they also have a white one, but it is not sufficient, so I use these. And this is my favorite color, so I bought I got this one as well. These I got from EBS. This is a work. I mixed white in my blue color, so this is giving some pastel shade. And then I also mixed white in my green color for these light leaves, and then pink for this pink, white and red portrait, this pink portrait pink for this skin color. Next up we have some supplies for calligraphy artists or lettering artists. So I mostly use these little artist agile colors. These are affordable and they are good quality. Like itna bad quality nahi hai, but they are like very cheap colors. Like this is just 160 per pack. They have 12 colors, and you know they are like you can write from both sides. So one nib is like the broader one, and one is thinner one. So आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं. They are very good for beginners. अगर आप लेटरिंग या फिर कैलीग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं तो they are good for you to begin with. Then I have this Brustro set of this was set of 6. These are fine liners, so आप इससे भी कैलीग्राफी कर सकते हैं. I'll show you. Okay, I'm writing Priya. मुझे ज़्यादा नहीं पता कैलीग्राफी के बारे में, but I am just telling you whatever I know. So when you go up, it should be like a thin line, and when you go down, it should be like thick line, like this. So you can just fill it like this. Then we have this tape and some tissue paper. This tape you can get from any painter shop. आप इसको किसी भी हार्डवेयर शॉप से ले सकते हैं. पेंटिंग लाइक जो ऑयल पेंट्स मिलते हैं या वॉल पेंट्स मिलते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं. दिस इज़ वेरी इजीली अवेलेबल. आप अमेजोन से भी ले सकते हैं. आई हैव लिंक इन डिस्क्रिप्शन. एंड टिश्यू पेपर्स तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, राइट. Then I have some small stuff like pencil, eraser, and I have one paper cutter. For these cakes, if you have any doubt like these cakes are good or not, let me show you some of my works which I have, in which I have used these cakes. So all my starting, like I also started with these cakes only. So I have all my starting pages have these colors only. So this is the quality of these colors, and this is really good. If you are a beginner now, you can use these colors. So 18 shades वाला ये पैक है, but you can also get 24 वाला पैक. वो भी काफ़ी बेटर है, and they have like more shades than this. Okay, so all of these box are from this watercolor cakes. I have already covered this thing in my previous videos. Whenever you are going to use the cakes now, you can spray some water. I have this spray bottle. You can spray some water on this, so ये reactivate हो जाते हैं. Like जो कलर आपको जो वाइब्रेंसी मिलेगी वो बेटर रहेगी. I have already linked in my description box. You can check them and buy whatever you find like good for you and in budget for you. Okay, so I really hope you like this today's video, and if you like, please subscribe to my channel and like this video and share this video. Thank you so much for watching.